में वो जो ट्रोट्सडेम वाली लाइन थी, दिस वन, सॉरी नॉट ट्रोट्सडेम, Ich finde, dass sie toll die Austauschschüler kommen, weil ich nicht. while से सही है, ये वाली लाइन में क्या बोलना चाहते थे? मैम उसमें फर्स्ट टॉपिक था ना कि क्यों आपको ग्रेट लग रहा है वो लोग मतलब हाँ आ रहे हाँ, हैं बट तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है. लाइक आई फाइंड दैट यू आर ओके. ये जो टॉल यहाँ पर यूज हुआ है ना, इट शुड बी लाइक हियर, आई फाइंड इट ग्रेट दैट यू आर कमिंग. ओके ओके, दास जी, दी आउस्टाउस श्यूलर हटा दो, नॉर्मल कॉमन. ओके, और जी यहाँ पर बड़ा होगा. जी भी नहीं, दो यूज होगा क्योंकि एक इनफॉर्मल लिख रहे हो ना ये तो. यस दास दू कॉन्स्ट. लेकिन मैं सभी लोगों को मतलब जो भी आउस्टाउस शूलर है वो लोग आ रहे हैं वो मुझे अच्छा लगता है. नहीं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, वहां पर एक बच्चे की बात हो रही है. आउस्टाउस श्यूलर क्या होता है? एक्सचेंज स्टूडेंट. ओके, सो उसमें एक बच्चे की बात हो रही है जो कि तुम्हारे यहाँ सारे थोड़ी आपके यहाँ पर रहेंगे. देर इज वन स्टूडेंट हु इज कमिंग एज अ एक्सचेंज स्टूडेंट हु विल बी स्टेइंग विद यू. ओके, उसके बारे में लिखना है कि हाउ व्हाई यू आर फाइंडिंग इट ग्रेट कि वो आ रहा है एंड ऑल. सो उससे रिलेटेड लिखना है. ओके, सबके लिए नहीं लिखना. नॉर्मल डू यूज करो. आई फाइंड इट ग्रेट दैट यू आर कमिंग बिकॉज ich nicht nur andere Sprache lernen, lerne, sondern auch neue Kultur kennenzulernen. Okay? Yes. इसका correction I'll send it after the class. Tile 3 is remaining to check. बाकी I guess tile 2 में there's no. Tile 2 में see, नो डाउट सही जा रहा है. लेज सॉरी श्राइबन, मिस्टेक्स एंड ऑल इतनी नहीं है. बट स्पेशली टाइल 2 में ना पॉइंट्स थोड़े, आई वुड से कि क्योंकि स्टार्टिंग में जस्ट यू यूज एंड ऑल, फिर उसके बाद रिलेटेड टू समथिंग, समथिंग इज मिसिंग. लाइक पॉइंट्स थोड़े और लिखने की कोशिश करो. ओके, यस. heutzutage kann man viel सही जा रहा है. लाइक मिस्टेक्स इतनी नहीं है, बट आई वुड से कि थोड़े और पॉइंट्स अगर आए. ओके, यस. Okay, so we'll discuss the lesson. बाकी if other people come, we'll discuss वो tile 1 करेंगे expression की. Okay. So it is module test 6. First is richtig, second falsch, third richtig, fourth richtig, fifth falsch, and sixth is falsch. Doubt? 4 5 6 Fourth and fifth. Sixth भी is doubt? यस मैम. Okay. Frau Molau kümmert sich regelmäßig das Kind ihrer Nachbarin. Miss takes care regularly of the child of her neighbors. Okay. So pass die zweimal die Woche auf das Kind ihrer Nachbarin auf. 2 times a week. रेगलमेसिक मतलब क्या होगा? रेगुलरली, लाइक डेली. पर यहाँ पर क्या गिवन है? 2 times the week. ओके. तो मैम फाल्स ही आएगा ना रेगल में चीज थोड़ी ना. Just let me check. Fourth is richtig.
Verfügung was sie zweimal die Woche auf das Kind ihrer Nachbarin, das sie. Okay, regelmäßig and täglich. Regelmäßig is regularly. Täglich is daily. That's the difference. Okay. So sorry. Regelmäßig is like regularly. Regularly में हम regularly और daily. That is the difference. Täglich अगर लिखा होता like daily आज भी कल भी परसों भी regularly like regular basis पे and that वो regular basis जरूरी नहीं कि हर दिन हो. It could be with a gap but हाँ regular basis पे हो रहा है like हर क्वेश्चन सॉरी लेजर में इट इज गिवन 2 times द वीक सो वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है इट्स नॉट कि डेली अगर टेगलिश गिवन होता तब इट शुड बी फॉल्स बट रेगल मेसिग इज गिवन एंड लेजर में इट इज गिवन 2 times द वीक दैट्स व्हाई इट इज लाइक रेगुलर बेसिस पे हो रहा है वो ओके दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रेगल मेसिग और टेगलिश रेगल मेसिग को टेगलिश के साथ कंपेयर नहीं करना ओके लाइक सॉरी एक साथ नहीं लगाना लाइक दोनों का मतलब सेम नहीं है दैट्स व्हाई इट इज रिश्तिश coming to fifth den Spielplatz des Wohnheims benutzer nur seiner Bewohner the playground of the Wohnheim only residents use that only their residents. Nach dem Kaffee schauten wir uns das einige Anlagen Garten mit dem Spielplatz im Teil des Wohnheims waren andere Kinder da, other children there, mit denen sie herumtollen konnten, während wir auf saßen. Frau Müller erzählt, dass das Leben hier nicht nur in den gemeinschaftlich genutzten Räumen und ओके सो यहाँ पर ये जो हु इज दिस द सब्जेक्ट whoever the person जो कि अपने पहले उस एक्सपीरियंस की बात बता रहा है वो वहां पर रहता नहीं है जहां पर ये लेडी रहती है मिस मोलाओ और वहां पर ही वेंट देयर एंड वहां के पार्क में ही सैट ऑन द चेयर एंड ऑल फिर उससे बात करी वो जो पर्सन है जो कि यहाँ पर अपनी स्टोरी बता रहा है whoever the subject is वो वहां पर रहता नहीं है जहां पर ये मिस मोलाओ रहती है बट वहां के जो पार्क है वहां पर वो जा रहा है वहां पर बैठ रहा है ही इज स्पेंडिंग टाइम देयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वो जो प्लेग्राउंड है वोनहाइम का उसके सिर्फ वहां पर जो रहते हैं लोग सिर्फ वो ही यूज कर सकते हैं दैट इज फॉल्स वो पर्सन है वो वहां पर रहता नहीं है in spite of that he is going there he is meeting children he is talking with this miss lady he is sitting on the chair and all so wo that's why this statement is wrong understood the person is outsider in spite of that वो वहां पर रहता नहीं है in spite of that he is going on the park जो कि उस पर्टिकुलर रेजिडेंट या उस अपार्टमेंट या उस वोनहाइम का पार्ट है ओके ओके मैम यस Sixth Frau Molau nahm an einem Ausflug ins Burgenland teil. This lady took part in a trip in Burgenland. Took part. Okay. Regelmäßig werden auch gemeinsame Ausflüge organisiert. Der letzte ging ins Burgenland. Sie selbst nimmt zurzeit an einer Kochgruppe teil. वो बता रही है कि रेगुलरली एक ट्रिप ऑर्गेनाइज होती है और लास्ट टाइम वो लोग बुर्गनलैंड गए थे और वो शी दिस लेडी सेल्फ टेक पार्ट्स रिसेंटली zurzeit मीन्स रिसेंटली ना कुकिंग ग्रुप वो young und alt voreinander lernen जहाँ पर younger and older person learn from each other उसने ये तो बोला ही नहीं कि उसने ये तो बोला ही नहीं कि वो पर्टिकुलर लेडी टुक पार्ट इन अ ट्रिप जो कि बुर्गनलैंड गई थी वो सिर्फ नॉर्मली बता रहा है कि रेगुलरली एक ग्रुप
एक ट्रिप ऑर्गेनाइज होती है और लास्ट टाइम वो लोग बुर्गनलैंड गए थे. और नाउ रिसेंटली this lady also takes part in a cooking group. She take part in a cooking group, not this Burgenland trip. Okay, any doubt? No. Hmm. Okay. Sameer, any doubt? No, ma'am. Okay, coming to this one. Seventh BAC. And 10th, 11th, 12th is BCA. BCA. मैम इसका 7th बताना. 7th में 7th and 11th. क्या मार्क करा था 7th में? मैंने A किया था, बट B था आंसर. ओके, एनी और अदर? 11 का 11 क्या मार्क किया? A किया था इसका, बट इसका C था. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम. जीनल, Yes, ma'am. 12. क्या मार्क किया? B. ओके, एनी अदर? No, ma'am. Okay, now first one. In diesem Text geht es darum, welcher Sehenswürdigkeiten es in Deutschland gibt. But these places is there in Germany. Welche deutschen Sehenswürdigkeiten die Deutschen am meisten mögen? Which German attraction Germans likes the most? Der Kleondom bleibt nach wie vor die beliebteste Sehenswürdigkeiten der Deutschen. Okay. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage des deutschen Touristenverbandes. Okay. So umfrage is like a survey. So एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था कि कौन सा जर्मन की जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्लेसेस है कौन सी फेमस है या कौन सा लोग दे प्रेफर टू गो देयर. उस सर्वे के अकॉर्डिंग, उस सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, द कोलोन डोम इज लाइक द मोस्ट ट्रैवल प्लेसेस और टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पर लोग जाते हैं और फेमस. In der Umfrage konnte Deutschlands größter Kirche mit da stimmte bereits zum vierten Mal diesen Platz klar halten. Von Platz 3 auf Platz 2 verbesserte sich die Touristen. Tour in die Hauptstadt auf Platz 4 und 5 in Ranking jetzt. Top 15 beliebtesten Sehenswürdigkeiten sind die Attraktionen mit Gesichter. Kommt im Jahr. ओके ओके, सो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था कि जर्मनी में जो भी ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्लेसेस है उनमें से कौन कौन सी फेमस है. ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग उस सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग दे हैव बेसिकली व्हाट इज दिस नंबर कर दिया लाइक फर्स्ट लाइक द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर ऑल द जर्मनी या जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए फर्स्ट मोस्ट फेमस प्लेस इज दिस. फिर सेकंड प्लेस पे कौन सी है, थर्ड प्लेस पे, लाइक उन्होंने सर्वे के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई. उसी के बारे में दे हैव सेड कि इतने परसेंट लोग वहां जाते हैं, लाइक फर्स्ट प्लेसेस पे दिस ये है, फोर्थ प्लेसेस पे दिस. सेवेंथ में हाउ विच Sehenswürdigkeiten इन जर्मनी देर आर वो क्वेश्चन नहीं है, लाइक पूरे लेजन में वो गिवन नहीं है. उन्होंने ये बोला है कौन कौन सी जर्मन की ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है जहां पर जर्मन लाइक्स टू गो द मोस्ट. तभी तो उन्होंने फर्स्ट प्लेसेस पे ये और सेकंड प्लेसेस पे थर्ड प्लेसेस पे ये लाइक वो सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग. ओके समीर, ओके मैम. लेजर में ये पैराग्राफ में ये नहीं बताया कि कौन कौन सी है, लेजर में सॉरी पैराग्राफ में ये बताया कि लोग कहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं. ओके, कमिंग टू जी. this one. Johnny Depp antwortete auf den Brief der Schülerin. He answered of the letter of the student. Sang und tanzte für die Schüler. He sang and danced for the student.
Wir sind ein Haufen junger Piraten und haben Probleme bei einem Street mit den Lehrern. Wir fanden es ganz toll, wenn sie kommen und uns vergeben. Mit diesen Worten wanderte sich Schülerin aus dem London Stadtteil. Die große Familie. Mit ihrem Mitschüler plante sie möglichst viele Unterricht nicht stattfinden würden. Der Schauspieler soll am besten als Pirat verkleidet in die Schule kommen, wünschte sich die Schülerin. Sie konnte ihr Glück kaum glauben, als ihr Wunsch tatsächlich in Erfüllung ging. Als Kapitän Jack Sparrow erschien der Hollywood-Star in der London Grundschule und sang und tanzte mit 4 Schauspielkollegen zu Piratliedern. Okay, so they are saying something related to this person. What is this? Actor Johnny Depp. इस वाले पैराग्राफ में ये जो लाइन है इसमें दे हैव गिवन द एक्टर वो fair-clyded means he changed into costume and he comes to the school and जैसा कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने सोचा था and she could hardly believe her luck as als ihr Wunsch tatsächlich in Erfüllung ging as उसकी जो विश थी उस स्टूडेंट की वो सच होने जा रही थी als Kapitän Jack Sparrow erscheint der Hollywood Star in der Grundschule and as a Hollywood star he came into the London Grundschule and he sang and danced with 4 Schauspiel colleagues for with the sorry pirate songs. He dances and he sings with 4 colleagues is songs per and he came to the London Grundschule and the student Schülerin could hardly believe her luck like seeing Jack Sparrow in her school. Coming to option. He answered the letter of the student no. समीर कहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन है ब्रीफ से रिलेटेड आई नहीं थिंक मैम, ब्रीफ लेटर तो नहीं था, स्टार्टिंग में था वहां पे, बट वो फिल्म के रिलेटेड था। No. Okay, so basically brief से related तो mention I don't think है कुछ. Coming to option, he sang and danced for the student. यहाँ पर mention है ना इन lines में. जी मैम, वो लास्ट में है। Yes. हाँ। Coming to 12th, Beatrice wollte einen wirklichen Piraten sehen. Real pirate. He wants to see a real pirates. So begrüßten die Schüler den Stan mit großem Applaus und ihrem eigenen Song heißt es auch der, okay. Zu der geplanten Meuterei kam es am Ende dann doch nicht. Vielmehr zu passiven Widerstand. Der Schauspieler sorgte für so viel Aufregung, dass ein normaler Schulunterricht annimmt täglich. Wollte keinen Unterricht machen. जीनल 12th में कहाँ पर लिखा है सब बी वाला ऐसे लिखा नहीं है लेकिन फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ना लास्ट वाली लाइन ऐसी थी Mit ihren Mitschülern plante sie eine Meuterei, also einen Piratenstreik, damit möglichst viele Unterrichtsstunden nicht stattfinden würden. With her classmates, she planned a Meuterei, which was basically a Piraten strike. With that, many classes possibly could not take place. इसका आंसर तो मुझे मिला ही नहीं मैम, तो फिर मैंने ऐसे ही Okay. Beatrice is a name something? Okay, as a subject it is there.
वोल्ट काइनन unterricht machen पहले तो let us see Beatrice is written okay 9 year Beatrice captain okay so with her classmate she planned a Moitrai जिसमें she name mentioned Piratan strike जिसमें many classes as possible many classes could not take place. Basically she or that person don't want to basically उसको classes नहीं करनी थी. At the last, Surya geplanten kam some ender that came at the end. Vielmehr zu passiven Widerstand. Der Schauspieler sorgte für so viel Aufregung, dass ein normaler, that a normal class, school classes on that day was not possible. That person don't want to do any class. उसी से related that person has mentioned Beatrice. मैम ओके इसमें लाइन में ही होता है क्वेश्चन का आंसर, किस लाइन में मतलब ऐसे फर्स्ट पैराग्राफ में तो उसका फर्स्ट का आंसर, फिर सेकंड. मोस्टली लाइक ये जो लास्ट का पैर जरूरी नहीं है बट हाँ मोस्टली केसेस पे यू कैन से इसलिए मैंने बोला था ये जो 10th वाला क्वेश्चन होता है या 7th वाला उसको सबसे लास्ट में करना लास्ट. क्योंकि ये ओवरऑल होता है 11th 12th में ऐसे ही होता है 11th लाइक स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ में मिलेगा और ये जो लास्ट वाला है वो कहीं लास्ट लास्ट वाले में मिलेगा. ओके मैम. अगेन जरूरी नहीं है इधर उधर भी हो सकता है बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है. ओके इवन टाइल 1 में भी ऐसी है कि लाइक जैसे जैसे क्वेश्चंस जा रहे हैं सो वैसे वैसे पैराग्राफ की लाइक स्टार्टिंग के क्वेश्चन स्टार्टिंग के पैराग्राफ में लास्ट के क्वेश्चंस लास्ट के पैराग्राफ में ऐसा. ओके नाउ कमिंग टू दिस वन 13th is null 14th J 15th ha 16th E 17th F 18th is I and 19th A. Doubt? सारे डाउट है मैम, सिर्फ लास्ट के दो ही, 18 और And 19. 15 and 19. Okay, so सारे ही डिस्कस करते हैं basically. Okay, ma'am. Sie suchen nach Angeboten für Freunde und Bekannte, die während ihres Aufenthalts an der Ostsee verschiedenes unternehmen möchten. During their vacation on the Ostsee, they wants to do something different. Okay. पहले 14 से करते हैं फिर बाकी सबसे लास्ट में 13th करेंगे. ओके Robert möchte im Urlaub Kitesurfen lernen und Leute kennenlernen. He wants to learn kitesurfen, I guess something with that kite. Kite. And he wants to get to know new people. J. Oh, where's J? So I tage Grundkurs und 3 Tage Selbstständigkeiten unter Aufsicht, including Leihausrüstung und Trainingsmaterial, Spaß und gute Laune in der Gruppe. Group, so obviously get to know people. Movie urban ladies night beach wo trainee and full feel. Okay, so basically that is happening in a group with so many peoples and all and they are having a grund course like the basic course for beginners for kite surfing. That's why it is J. 14th 15 Ehepaar Gerber fährt nach Rügen seinen Hochzeitstage 18 July mit etwas ganz Besonderes zu Rügen में गए हैं for to celebrating their what is this wedding on 18th July. H. Sie suchen ein Highlight für eine Feier. Chartensions, Helikopter und okay. Wollen Sie eine? Okay, so basically they are asking if you are looking for something for a celebration and all. Wählen Sie eine unserer verschiedenen Routen über
Die traumhafte Landschaft der Ostsee-Insel Rügen. Rügen में ही they have went. Bei Wunsch auf Cocktail mit Steak. रिलेटेड टू डेट इसमें कुछ था नहीं, बट मैम एफ में, ऊपर वाले में एफ में ना डेट मेंशन की हुई है। verpassen Sie nicht unsere Hafenpartys. ओके, सो ये ना पार्टी एज इन ऑलरेडी कंडक्टेड है, दे आर जस्ट इनवाइटिंग यू। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर तो ये लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सो दे विल बी बुकिंग एंड ऑल वट एवर। पर एफ के अकॉर्डिंग वहां पर पार्टीज ऑलरेडी है प्लान, सब ठीक है, यू आर जस्ट इनवाइटेड देयर। ओके, coming to 16, Frau Bibber und ihre Freundin möchten ihren Urlaubsort am liebsten zu Fuß kennenlernen, by foot. E. Rügen im Herbst erleben bei geführten Wanderungen. In fachkundiger Begleitung erleben sie Natur, Gesichter und sagen der Wanderungen, hiking. So obviously by foot. Okay. जीनल 16 में क्या मार्क करा था? मैंने नुल कर दिया था। हाँ, ओके, यहाँ पर वांडरungen गिवन है ना, सो दैट्स व्हाई। ओके, हाइकिंग। Dieses Jahr kann Herr Müller aus Gesundheitsgründen keine Schiffreise machen. She cannot do any ship trip. Möchte aber den großen Kreuzfahrtschiffen so nahe wie möglich sein. But he would like to do a big trip as near as possible. F. Seventeenth. Mr. Miller from reasons cannot do, but Kreuzfahrtschiffen so nahe wie möglich, as near as possible. Big ships. Größten Schiffe werden mit Live Music, Bühnen, Programm und einem. Okay. इसमें they have like question में they have mentioned that this person because of health reason cannot do any ship trip, but he would like to do a big cruise ship, Kreuzfahrtschiffen cruise ship as near as possible. F में they have mentioned größten Schiffe with live music and all the programs with fireworks and all celebrated. Monitor informieren sich. Okay. So that's why यहाँ पर Groston Schiffer mention है with all the musics and all whatever. That's why it is F. जीनल क्या मार्क करा था इसमें? J. J. Okay, no. J में तो that is something related to course and all ना. समीर 17 सही था? जी मैम। Okay. 18th. Familie Denkler möchte ihren Aufenthalt an der Ostsee mit einer kleinen Schiffreise, small ship trip, verbinden. They wants to spend. Okay. I. Hansa Sail, Verein zur Förderung traditioneller Schifffahrt, Tagesabends Kurzfahrten, short trips, and short small ship trip. That's why it is I. Okay. Any doubt? No मैम, ये Nine. दोनों तो राइट। 19th समीर 19 सही है? नो मैम, 19 गलत था, मैंने बी लगा दिया था इसको। B, okay. Frau Niederweg hat mit ihrer Klasse das Projekt Tiere im Ozeanraum gemacht und sucht ein passendes Ziel für den Projektausflug.
ओके, उसने कोई प्रोजेक्ट करा था अपनी क्लास के साथ, दैट वाज एनिमल्स इन ईस्ट सी, एंड उसके लिए दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर अ destination for the project trip. A. Natur owned Museum Bathar Boden. Ostsee Landschaft und Tiere oder Ostsee. Besudesne ist ein. Okay. B. May über 90 Kites und Boards, Schulung, Musenda, September, Lieblingsbrauch, gebrauchten Kites und ओके यहाँ पर लाइक बी वाले में दे आर समथिंग मेंशनिंग रिलेटेड टू काइट्स एंड बोर्ड्स दे यूज्ड एंड ऑल नो ओके सो यहाँ पर ये जो दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर अ ट्रिप फॉर दैट प्रोजेक्ट करा है, उससे रिलेटेड ट्रिप करनी है उसको, और प्रोजेक्ट क्या था, एनिमल्स इन ओस्ट सी. मैम मैंने इसका सी किया था, सॉरी मैंने बी बता दिया आपको, क्योंकि 15 का मैंने ए मार्क किया था तो वो मेरा गलत था, और 19 का सी किया था मैंने, क्योंकि इन इसमें एन स्टॉक Dem größten zu an der deutschen Ostseeküste begegnen Sie in aus aller Welt und erleben das Abenteuer Evaluation. Zoo, German East Sea. Okay. And it was as in project was animals in East Sea region. East Sea coast. The biggest zoo. Evaluation. मैम उसने तो प्रोजेक्ट कर दिया है, अब उसको ना सिर्फ घूमने ही जाना है, ऐसे कुछ है ना? ओके हाँ यस घूमने जाना है, बट सी वाला इट इज अ जू, सो doesn't make sense in east so sea coast में, but they have done a project animals in the east sea belt, जी मैम, और यहाँ पर एज इन ए वाले में ईस्ट सी कोस्ट लैंडशाफ्ट und Tiere Meeres Tiere der Ostsee, sea animals of the East Sea. ओके सो उन्होंने जो प्रोजेक्ट करा था दैट वाज रिलेटेड विद द एनिमल्स ऑफ द ईस्ट सी हु लिव्स इन द सी. यहाँ पर दे गॉट टू नो अ चांस, और दे हैव द चांस टू गॉट टू नो एनिमल्स या फिर मियरेस्ट टियर डेयर ओस्ट सी एनिमल्स ऑफ द ईस्ट सी. ये तो जू है, जू में जाकर थोड़ी कुछ पता चलेगा. ओके उनका जो जी प्रोजेक्ट था दैट वाज रिलेटेड विद द ईस्ट सी एनिमल्स. ओके वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. ओके, अंडरस्टूड डिफरेंस जी मैम. नाउ. This 20 yeah 21 9 22 9 23 yeah 24 is 9 25 doubt. Yes ma'am. Which one? 24, 25, 26. 24 24 and 26 5B. okay मैम 23 भी बता देना फिर. okay
So जो article है that is for nächtliche Skifahren, skiing in the night. Auch nachts bei künstlichem Licht Ski zu fahren. Okay. 23. Ich bin aus dem Norden und kann selbst nicht Ski fahren, aber bei uns gehen wir auch im Sommer nachts gern mal am Meer spazieren, an der Küste oder auch in den beleuchteten Straßen. Warum sollen die Menschen in den Bergen nicht auch die Möglichkeit haben, mal nachts ihr Hobby auszuüben? Okay. So this person is saying कि I'm from north and मैं खुद ski फारन नहीं कर सकता, but summer nights में we go on the normal for a walk on the sea and on the coast region and also on the streets. Now at the end उसने बोला कि why should the people in the mountains do not have the possible do not have the chance to try their hobbies in the night. वो स्की फॉरन लाइक वो स्की फॉरन खुद नहीं कर रहा है, बट ही इज एक्सप्लेनिंग कि इन द समर नाइट्स वी गो हेयर एंड देयर एंड ऑल, एंड ही इज काउंटर क्वेश्चनिंग कि जो पीपल हु लिव्स इन द माउंटेन्स एंड ऑल, व्हाई डू यू डू नॉट हैव द चांस टू ट्राई देयर हॉबीज इन द नाइट. ओके, सो ही इज इन द फेवर ऑफ दिस कि ट्राइंग स्की फॉरन या फिर ट्राइंग एनी हॉबीज इन द नाइट. ओके, Okay, man. 24. Martin, was sich die Liftsbesichter und Berghütten-Eigentümer alles ausdenken? Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein, auch noch nachts die Pisten zu öffnen und gefahren zu lassen. Das ist ja wohl das Letzte. It can truly be best also in the nights to open to let the people ski fahren. That is, yeah, true. Berghütten Eigentümer. Its design also let people ski. That's the last true. Berghütten Eigentümer. Be serious also in the nights they letting people. मैं उसने सेकंड लाइन में बोल रहा हूँ. Okay, piston. Das kann ja wohl nicht ihre Festen sein. Piston is runways or tracks or ski slopes. Okay. They cannot be serious or they cannot be true to open to open the runways at the night and let the people do ski fahren. Das ist ja wohl das Letzte, and that's the wohl is serious. That is surely as ओके, अगर हम इस लाइन से ओवरऑल निकाले लाइक यहाँ से यहाँ तक, सो दैट पर्सन इज सेइंग लिफ्ट besitzer und Berg is mountain, hut is hut, eingenehmte people who live in mountain huts. Berg hut, mountain hut owners. Okay, yes, हाँ.
So, but all they think they cannot be serious and they cannot open the runways in the nights and let the people ski. So, that person is against this. That's why it is 9. Okay. जी मैम। Coming to 24, Mark. Niemand an die Beseilbesister. Wir müssen da oben auf den Bergen ganz schön unsere Kundschaft kämpfen. Es kommen sowieso jedes Jahr weniger Skifahrer. Every year less. Okay. Es ko Das bedeutet auch, dass wir weniger verdienen. Nun haben wir einmal die Möglichkeit, noch ein bisschen länger offen zu sein, um die Kunden der Nachtpisten Guido zu bedienen. Schon fangen die Umweltschützer an zu schreien. Das finde ich einfach nur unfair. Okay. Äh, an die Bergen ganz schön um unsere Kundschaft kämpfen. For customer, every year few ski foreign comes. That also bedeutet that we earn less. Only we have the once the opportunity to एज इन थोड़े टाइम देर के लिए आप वो जो वो स्कीइंग का जो ट्रैक है उसको ओपन रखना इन ऑर्डर टू बेसिकली जो कस्टमर्स है इन ऑर्डर टू बेसिकली जो कस्टमर्स है और द पीपल कैन स्की एट द नाइट फिर उसके बाद द environment protectors started to shout and that I simply find it unfair. So overall he's saying कि वैसे ही लोग like customers comes very less and at the end we earn so much less and we only have the opportunity to open the tracks, that runway tracks, for a little bit longer, but so that people can ski for a long time. But उसी टाइम पे all the environment protectors start to shout to close the tracks, so that he finds it unfair. Okay, so he's in favor of the night like nachts ski fahren, so that those person जिनकी earning इससे होती है they could earn more, but उसमें एक stoppage लगती है for the Umweltschützer की. Okay, any doubt? मैम फिर इसका 9 नहीं होगा जब इसमें स्टॉपर तो लगता ही है, फिर वो नहीं करने तो देते नहीं हैं हमको। 9 नहीं होगा. दैट पर्सन इज सेइंग कि हम वैसे ही कम कमाते हैं एंड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है थोड़ा ज्यादा कमाने की कि हम थोड़ा देर वो जो रनवे का स्लोप है उसको थोड़ा और लाइक रात में थोड़ा और खोले रखे. बट जैसे हम वो करते हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्टर्स होते हैं वो शाउट करने लगते हैं टू क्लोज द डोर्स, सॉरी टू क्लोज दैट रनवे ट्रैक्स. सो वो तो फेवर में है ना कि जी हमको खोल के रखना चाहिए, बट पीपल स्टार्टेड टू शाउट देयर एंड ही दैट शाउटिंग ही फाइंड इट्स अनफेयर. ओके, ठीक है मैम। yes. Coming to Otto. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit als Bub war ich regelmäßig zum Skifahren in den Bergen. Einmal im Monat gab es dann einen Fackelablauf. Da sind die Skilehrer bei Nacht mit den brennenden Fackeln in der Hand die Zentralpiste hinuntergefahren. Das hat mich zwar damals beeindruckt, aber jede Nacht Skifahren mit künstlichem Licht, so viele Skifahrer, die Nacht zum Tag machen, das tut doch die schöne Stille, die nachts in den Bergen herrscht. Okay, I still remember my childhood. I regularly go for skifahren in the mountains. Once in a month there was a Fackelablauf. Okay, where the ski teachers, the hand is central pistol hidden under ski down.
burning fackel. Okay, so fackel is torches. Brennenden burning. Key teachers with the burning torches in the hand at night, they basically go for the skiing. Das hat mich zwar damals beeindruckt, उस time पे that excites me, but every night ski fahren with the torch, so many ski fahren, the making night into the day, that disturbs the beautiful sides or sights of the mountains. So he's saying, that person is saying ki uh, childhood may he goes regularly for the ski faran and all, and once in a month there was this faka ablauf, something related with the torch running or torch procession, जहाँ पर जो ski teachers थी वो अपने हाथ में burning torches लेके they used to skiing in the night. उस टाइम पे ही एज इन उस टाइम पे that impressed him, that person liked it. But her, as in every night doing skiing with the torches and so many ski farers, and he's putting questions like so many ski farers and her then night doing ski faran and making night into the day. He is using like दिन में तो करते ही है, and even in the night they are doing ski faran. That disturbs the beautiful sights of the mountains, so he's against with that. Okay, he didn't want ki people also do skiing at the night. Okay. Okay. Okay, that's why it is 9. Coming to Sie informieren sich darüber, wie man sich bei einem Restaurant richtig. Okay, okay. Sorry. 27. B 28 C. B and 30 is C. Doubt? B C B C. मैंने सारे बता दो क्योंकि इसमें Okay. इसको करते टाइम ना वो बोरिंग सा लगता है, पता नहीं क्यों आंसर्स मिलते ही नहीं मुझे. Okay, coming to Raukhand. इसका तो बेकार था और मान लो. Sollte man nur, wenn es die anderen Gäste nicht stört. One should only smoke when other guests are not disturbed. I need to read all this. Okay, heute gibt es in den meisten Gast einen Raucher- und Bereich, Smoking and Not Smoking Area. Empfehlenswert ist, die Gäste vor dem Betreten des Lokals zu fragen, wo sie gern sitzen würden. Aus Höflichkeit sollten Raucher anbieten, in den Nichtraucher zu gehen. Auf jeden Fall sollten Raucher vor dem Anzünden einer Zigarette. Or in any case, the smoker should ask for a cigarette if it is disturbing the other guest. Unstewed. To light something. Okay. In any case, one should ask for a lighting of a cigarette if the guests are disturbed as the under a guest. Okay. अगर कुछ और लाइन ist nicht richtig. Dürfen die Gäste nur vor dem Eintreten. Okay, so 27th में क्या मार्क करा है? मैम किया तो बी था, बट इसमें ये डाउट था ना कि आंध्र गेस्ट में निस्ट आ रहा था बीच में, तो थोड़ा डाउट हो रहा था, बट बी मार्क किया था इसका. हाँ, राउखन एज एन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है कि वन शुड ओनली स्मोक जब
other guests are not disturbed. Okay, अगर वो disturb हो रहे, they should not smoke. यहाँ पर they have mentioned starting से कि दो दो एरिया होते हैं for smoking and non-smoking person. जी मैम। And last में they have mentioned auf jeden Fall sollten Raucher vor dem Anzünden einer Zigaretten fragen, ob es the andere Gäste stört. So they are saying in any case, the smoker should ask for the other guest when he is lighting up the cigarette. He should ask the other guest if it is irritating or if it is disturbing other guest. ये जो S यूज हुआ है वो इसके लिए यूज हुआ है, to lighting up a cigarette. Okay. So ओके they मैम। are saying कि smokers, whoever जो भी who are lighting up the cigarette, they should ask for other guest अगर वो इस चीज से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे. So क्वेश्चन में भी ये है ना कि they should only smoke जब other guests they are not disturbed by that, right? Clear? जी। Okay. Clear। Zu bestellen in order to order sollte man dem Kellner ein Zeichen mit der Hand machen. Zeichen means a sign, like cafe or restaurant may we do like a hand shiner to the waiter ki come here and take the order and all. So they're saying that in order to order the place or place in order, one should do a sign to the waiter with the hand. Mm. Betreten Kellner. Smaker reicht aus schon. Kleines Handzeichen sollte er sie nicht sehen, wenden sie sich an einen seiner Kollegen. Lautes Rufen sollten sie unterlassen. Okay. Den Kellner auf sich aufmerksam zu machen, reicht oft schon ein kleines Handy session in order to get the what is this waiter's attention. Just show a small hand gesture. Sollte er sie nicht sehen, wenden sie sich an einem seiner Kollegen und bitten sie ihn, ihren Wunsch weiterzuleiten. So if he didn't see, or basically अगर waiter ने नहीं देखा, wenden sie sich an einer Kollegin and bitten sie ihn, ihren Wunsch weiterzuleiten. And they're saying कि अगर waiter didn't see your hand gesture, just ask your colleague to pass on your request to the waiter. Basically, shouting is not allowed. Just show a small gesture or small hand gesture to the waiter. Coming to in order to order, sollte man dem Kellner ein Zeichen mit dem Hand machen? That is correct. Muss man den Kellner laut rufen? That is not allowed. Muss man sich beim Kellner erkundigen, welcher Kollege an diesem Tisch? No, 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 no. Wrong. Okay. मैम 28. इस topic में क्या बोल रहे थे ये मुश्मान जिश Beim Kellner erkundigen, welcher Kollege an diesem Tisch die Gäste bedient. So they are saying that in order to order, one have to see waiter which colleague will be at the table of the guest. Something related to कि कौन सा waiter will be allowed for the which table. It doesn't make sense. He's serving. Ha. Muss man sich beim Kellner erkundigen? Is erkundigen to confirm, like one have to confirm with the waiter which colleague or basically which waiter on diesem Tisch the guest bedient. कौन सा waiter उस particular table पे होगा to help with the guests. Okay, doesn't उससे related कुछ है ही नहीं. Okay. ओके मैम। Coming to 29, nach dem Essen ist es besser mit einer Kreditkarte zu bezahlen. ये तो राइट था मेरा। Am Tisch erledigt, empfehlen. ये सही है जीनल? नो मैम, आ किया था।
Sollte man ein Trinkgeld geben? Trinkgeld ist wo Tipp, wenn die Bedingung zufrieden war. Okay. Empfehlenswerter, weil diskreter ist die Benutzung einer Kreditkarte. Es ist in Deutschland nicht zwingend vorgeschrieben. Okay, so basically Germany में it is not allowed or वो अच्छा नहीं मानते हैं to give a tip in a restaurant. Okay. Mit Bildung zufrieden gewesen ist das übliche ein kleines Trinkgeld zugeben. Tisch erledigt, okay. Empfehlenswerter, weil diskreter ist die Benutzung einer Kreditkarte. Empfehlenswerter, like empfehlen is to recommend. So empfehlenswerter, like recommendable, because